हे शारदे मां शारदे, हे शारदे मां शारदे, अज्ञानता से हमें तार दे, अज्ञानता से हमें तार दे। हे शारदे मां शारदे, हे शारदे मां शारदे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, शिक्षा का हमारा अधिकार दे। हे शारदे मां शारदे, हे शारदे मां शारदे, अज्ञानता से हमें तार दे, अज्ञानता से हमें तार दे, हमें तार दे, हमें तार दे, हमें तार दे, हमें तार दे। Takes place. It is about what you do with the golden opportunities hidden within. Namaste and a very hearty good morning to all. Welcome to the morning assembly of TGS Colleges Rajkot. I am Kashish, your host for today. It is 23rd December 2020 અને આજની તિથિ માક્ષર સુદ 9 બુધવાર છે. So, let's welcome this fine day with a blissful prayer song. ओ शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में, शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में। ओ
चंद्रमौल चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, गल मुंड माल राखे कर त्रिशूल धारी है। ओ चंद्रमौल चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, गले मुंड माल राखे कर त्रिशूल धारी है। नंदी पे सवार ऐसे, नंदी पे सवार ऐसे, शिव की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में। संत और फकीर सब है शिव की शरण में, गरीब और अमीर सब है शिव की शरण में। ओ संत और फकीर सब है शिव की शरण में, गरीब और अमीर सब है शिव की शरण में। शिव जी सबको मिलते हैं, हो शिव जी सबको मिलते हैं, ज्ञान और धर्म में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण। हो शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, शिव 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 की शरण में। ઘણી વખત એવું થાય છે કે જીવન અને સંબંધોમાં કશું ન કહેતા પણ ઘણું બધું બોલાઈ જતું હોય છે. શબ્દો લાગણી કે ભાવનાઓનો મોથાજ હોતો નથી, પણ ક્યારેક સંબંધોને સાચવવા શબ્દોનો ઉપયોગ જાણી સમજીને કરવો પડે છે. એવી જ એક કવિતા લઈને આવી રહી છે નિધિ. લેખક અને કવિયત્રી તરીકે હું નિધિ કંસાગરા કોલેજ વતી મારા દ્વારા લખાયેલ કવિતા રજૂ કરી રહી છું. ત્યારે ફક્ત એટલું જ કહેવું છે કે જીવનમાં કઈ અઘરું છે તો એ છે શબ્દો, અને જો આ શબ્દો કેલ્ક્યુલેટરની માફક કાર્ય ન કરે તો સંબંધો સચવાતા નથી, ખરું ને? અને ત્યારે સંબંધો ન સચવાય ત્યારે આપણા મગજમાં કંઈક આવું જ મનોમંથન ચાલી રહ્યું હોય છે, જેમ કે
નથી કહેવું માં પણ ઘણું બધું કહેવાઈ જાય છે. નથી કહેવું માં પણ ઘણું બધું કહેવાઈ જાય છે. આ તો જીવન છે જ્યાં ઘણું બધું રમાઈ જાય છે. નથી કહેવું માં પણ ઘણું બધું કહેવાઈ જાય છે. છે ઘણી જીવન જીવવાની રીતો અને ત્યારે અનુકૂળ ન હોવા છતાં પણ આપણે એને આપણું બનાવી લેવું પડે છે. નથી કહેવું માં પણ ઘણું બધું કહેવાઈ જાય છે. પસંદ હોવા છતાં માણસો બદલાઈ જાય છે અને ત્યારે રસ્તો નક્કી હોવા છતાં રાહ બદલાઈ જાય છે. નથી કહેવું માં પણ ઘણું બધું કહેવાઈ જાય છે. સાથે હોવા છતાં સંબંધ તૂટી જાય છે અને ત્યારે શબ્દો હોવા છતાં જીભ વળી જાય છે. નથી કહેવું માં પણ ઘણું બધું કહેવાઈ જાય છે. પ્રશ્નને પણ પ્રશ્ન થાય છે જ્યારે માનવને જ માનવ ધર્મ ભૂલાઈ જાય છે. નથી કહેવું માં પણ ઘણું બધું કહેવાઈ જાય છે. મૌન હોવા છતાં શબ્દો સંભળાઈ જાય છે અને ત્યારે તમારા અને મારા જેવા સંબંધો રચાઈ જાય છે. નથી કહેવું માં પણ ઘણું બધું કહેવાઈ જાય છે. આભાર. किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि एक सच्चे हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है. उसी तरह हर एक इंसान के अंदर छिपा हीरा भी एक जौहरी ही पहचान सकता है. ऐसी ही एक अद्भुत कहानी लेके आ रही है वृंदा. नमस्कार, मेरा नाम है वृंदा. एक बार मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या कागज में आग होती है. उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, ये कोई पूछने का सवाल है जनाब, बिल्कुल नहीं. मैंने कहा, यदि कागज में आग नहीं होती तो माचिस की एक तीली से दी गई छोटी सी आग से कागज के भीतर से इतनी बड़ी आग कैसे निकलती है. हर चीज में आग छिपी होती है और माचिस की वो तीली उस छिपी आग को दहकाती है. एक बार एक बच्चा स्कूल से लौटकर घर आया और उसने अपनी माँ को टीचर ने दी हुई एक चिट्ठी दी. माँ ने जब चिट्ठी पढ़ ली तो उस बच्चे ने माँ से कहा, इसमें क्या लिखा है. माँ ने कहा, इसमें लिखा है मैडम, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और हमारे स्कूल में ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो आपके इस प्रतिभावान बच्चे को पढ़ा पाए. बेहतर होगा कि आप उसकी शिक्षण की व्यवस्था कहीं और करें. वर्षों बाद जब माँ का देहांत हो गया तब वो बच्चा एक मशहूर वैज्ञानिक बन चुका था. वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए आया. सारी विधियों के पूर्ण होने के पश्चात वो अपने माँ के घर गया. उसने टेबल के ड्रॉअर में एक वर्षों पुरानी चिट्ठी देखी. वो चिट्ठी पढ़ते ही उस वैज्ञानिक की आंखों में आंसू आ गए. उस चिट्ठी में लिखा था, मैडम, आपका बच्चा एक नंबर का बुद्धू है और हम उसे सिखाकर तंग आ चुके हैं. बेहतर होगा कि आप उसकी शिक्षण की व्यवस्था खुद करें और हम उसे उस स्कूल में से निकाल रहे हैं. उस चिट्ठी को पढ़ते ही उस वैज्ञानिक ने चिट्ठी के नीचे लिखा, जी हाँ, थॉमस एडिसन एक बुद्धू बच्चा था जिसे अपनी माँ के विश्वास और समर्थन ने एक बड़ा वैज्ञानिक बनाया. जी हाँ दोस्तों, हर एक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की कला या हुनर की आग छिपी होती है. यदि कोई विश्वास करने वाली वो माचिस की तीली वो व्यक्ति मिल जाए तो उस छिपी आग को दहकाती है, बाहर लाती है. तो ढूंढिए किसी व्यक्ति को जो आप में छिपी उस आग को दहकाए या बनिए वो माचिस की तीली जो किसी के भीतर की आग को बाहर लाए. धन्यवाद. We all have that one person in our life whose work, success and behavioral patterns motivates, inspires and brings out the spark from us to be like that person. Same way, we now welcome our next performer Riddhi to verbalize about her role model Dr. APJ Abdul Kalam. Namaste. My name is Riddhi.
I am pursuing my first year of BCom in Kansagram Mahila College. First of all, I would like to share something about myself. I am really passionate to writing stories and have already written some scripts. I don't like to waste my time on silly things. Today, I want to share something about my role model, Dr. APJ Abdul Kalam. His full name is Abu Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. He was an Indian scientist and politician who played a leading role in India's development and missile weapons program. That is why he is known as Missile Man of India. He has my inspiration since I was too young. I think he is one of the greatest inspiration for all the students. He has inspired millions of youth throughout his vision, hard work and simplicity. He was an ordinary man with an extraordinary will. He taught us to be a learner at every phase of life. He said, thinking is the capital, enterprise is the way, and hard work is the solution. He believed that through difficulties and problems, God gives us the chance to grow. So whenever your hopes, dreams and goals are dashed, search among the wreckage. You may find a golden opportunity hidden in the ruins. He also gave the inspirable message to India's young generation that never stop fighting until you arrive at your destined place. He was a true ideal citizen and a very positive person. He gave the success mantra to India's young generation that I would like to share in his words only. He said, you must have an aim in your life. You must acquire knowledge continuously. You have to work hard and you must have perseverance to realize the great life. And at the end, I would like to thank Abdul Kalam to become the very greatest inspiration for India. Thank you. India is famous worldwide for its different classical dance styles. And here comes our next performer, Aparna, upholding the spirit of Kathak dance form. Hello friends, I am Aparna from Kansagra College. I am doing Kathak and my specialty is our Indian classical form Kathak. And today I am going to present a dance which name is Shantakaram. Thank you. It is rightly said that it is our own thought process that holds the key to miraculous transformations. With this, I would now like to call Amni for today's Point to Socho. Namaste and good morning to all. I'm Avni and today's Point to Socho is: can you live without your roots? Can you live where you don't belong to? Well,
To clear your answer, let me tell you a story. When I was little, I picked up a flower and put it in a vase. After a few days, it died. I asked my mom, why? She said to me that you can't drive a flower to live where it doesn't belong to. Zara socho, can you live without your roots? Can you live without your family? Can you live without your loved ones? Can you live when you don't belong to? After so many years of that incident, now I have realized that we are just like that flower. Zara socho. I would now like to request everyone to rise for our national anthem. Assembly Saudhan. Assembly Vishram. Every ending is creating the space and opening for an amazing new beginning. On this note, we would now like to end our assembly with a beautiful exit song. Sri Krishna Sharanam Mama, Sri Krishna Sharanam Mama, Sri Krishna Sharanam Mama, Sri Krishna Sharanam Mama. Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Mama. Tame Gokulma આવ્યા નાસીને, તમે મારી પુતના માસીને, તમે તારી કુબજા દાસીને, જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की. श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम. श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी, गोविंदा गोपाल जी, दीनानाथ दयाल जी, जय कृष्ण कन्हैया लाल की. श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम. तमे गिरि गोवर्धन धार्यो छे, तमे इंद्रनो गर्व उतार्यो छे, तमे मामा कंसने मार्यो छे, जय कृष्ण कन्हैया लाल की. श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम. तमे गोकुल गायो चारी छे, तमे मुख पर मुरली धारी छे, श्री राधा ने घणी प्यारी छे, जय कृष्ण कन्हैया लाल की. श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम. तमे प्रेम निवश थई आवो छो, तमे भक्तो निवाहरे धावो छो, तमे भक्ता दिन कहवाओ छो, जय कृष्ण कन्हैया लाल की. श्री कृष्ण शरणं मम, श्री
अंतर्जामी छो, गर्व भंजन गरुड़ गामी छो। जय कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। तमे गोपियों ना चित चोर छो, तमे वृंदावन विहारी छो, तमे नामे कुंज बिहारी छो। जय कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। हार हीरानो झळके छे, काનમાં કુંડળ લળકે છે, મુખડું મનોહર મલકે છે। જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की। શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ। તમે દર્શન દેજો અંત ઘડી, તમે વિલંબ ન કરશો એક ઘડી। સૌ સેવક વિનવે પાય પડી। જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं